Hello everyone, a very warm welcome to all my enthusiastic learners. Today in this lecture we are discussing ion exchange chromatography. So आज के लेक्चर में हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो बिना किसी डेफिनेशन के सीधा हम स्टार्ट करते हैं. ये प्रोसेस कैसे काम करता है. हमारे पास एक इनसॉल्युबल मैट्रिक्स है जो कि पॉलीमर की बनी हुई है. ठीक है, एक इनसॉल्युबल बॉडी है, इनसॉल्युबल बॉडी. ठीक है, वी हैव एन इनसॉल्युबल बॉडी दैट इज एक्चुअली पॉलीमरिक इन नेचर एंड हैज़ अ चार्ज. ओके, and it is insoluble in water and other solvents. Why? Because this forms a part of a column, right? So when we pass certain solvent, it should not dissolve in the solvent. So it is insoluble in water and in organic solvents, right? Now this insoluble polymeric body is charged. Say it has a negative charge, right? It has a negative charge. So to balance this charge, there should be an equal and opposite charge, and that is given by the counter ion. Okay, the counter ion, it is a part of the resin matrix, right? And it is A plus. Let's say it is A plus. Okay, now when a solution is passed through the column, okay, and it has another ion B plus. Okay, now the resin matrix has a different affinity towards B plus. So what happens is A goes into the solution and B goes into the matrix. So in this process an ion exchange takes place. So this is how the ion exchange chromatography is performed. So इसमें हमने क्या पढ़ा, एक insoluble body है, polymeric body है, उसका एक charge होता है, negative charge होता है या पॉजिटिव भी हो सकता है, और उसको बैलेंस करने के लिए एक हमारे पास काउंटर आयन होता है जिसका इक्वल और अपोजिट चार्ज होता है. इक्वल कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं, वो डिपेंड करता है वैलेंसी पे, कितनी सारी वैलेंसी वो सेटिस्फाई करता है. ठीक है, तो एक अपोजिट चार्ज होता है और वो जब एक सोल्यूशन उस क्रोमेटोग्राफिक कॉलम से पास किया जाता है तो एक एक्सचेंज होता है आयंस का. क्यों? क्योंकि उसकी जो रिलेटिव एफिनिटी होती है वो चेंज हो जाती है दूसरे आयन की प्रेजेंस में. मान लो सिर्फ A प्लस अगर प्रेजेंट है सोल्यूशन में तो वो A प्लस को प्रेफर करेगा, क्या, रेजिन मैट्रिक्स. लेकिन अगर B प्लस भी है तो सेलेक्टिव हो जाता है कि वो B प्लस को फेवर करेगा. चलो अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं. नाउ द रेजिन मैट्रिक्स, ओके, व्हाट हैपेंस इज इट इज़ अ पॉलीमर. इट इज़ फॉर्म फ्रॉम स्टाइरीन. ओके, दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है. और डाइविनाइल बेंजीन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन जो है, इसको प्रोसेस को हम बोलते हैं कोपॉलीमराइजेशन. पॉलीमराइजेशन मतलब पॉलीमर का बनाना, और कोपॉलीमराइजेशन में क्या होता है, कोई डिफरेंट दो मोनोमर्स होते हैं दूसरे, जैसे स्टाइरीन और डाइविनाइल बेंजीन दोनों अलग अलग यूनिट्स हैं, तो उसको हम कोपॉलीमर बोलते हैं. तो ये प्रोसेस क्या है, कोपॉलीमराइजेशन है, इन दोनों को कंबाइन करके एक यूनिट में बनाना, या फिर ऐसी बहुत सारी यूनिट्स को कंबाइन करके एक स्केलेटन बनाना. ओके, फिर इसको सल्फोनेशन किया जाता है, राइट, सल्फोनेशन किया जाता है, सल्फोनेशन करते हैं. ठीक है, इसमें सल्फोनिक ग्रुप इंट्रोड्यूस किया जाता है, राइट, SO3- H ग्रुप इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिससे क्या होता है, ये जो नॉन पोलर होता है ना, दिस इज नॉन पोलर. ओके, द पॉलीमरिक स्केलेटन इज नॉन पोलर, बाय सल्फोनेशन इट बिकम्स पोलर. सो दैट्स व्हाई इट हैज़ अ चार्ज, ओके, एंड इट अट्रैक्ट्स or has a counter charge. Now these monomer units are joined by linkages, right, and this is a cross-linked polymer, right. So the degree of cross-linking, right, it defines the physical properties of the resin. Now when there is more cross-linking, it is brittle, hard, and is more impervious, right. So what we see is there is a formation of a polymeric skeleton, okay,
and it has cross linking which decides certain physical properties. So this resin matrix is very versatile. Okay, let us see what's next. Now cation exchangers, right? What are cation exchangers? Exchangers that can exchange a cation. So the resin is negatively charged, right? Okay, so what happens is we have solid granules. For example, we have cation exchanger, we have solid granules that swell in water. When we place them in water, they swell and give like a gel, okay, gel like structure, but the swelling is limited by the cross linking. तो अब जो swelling है वो किससे लिमिट हो जाती है? क्रॉस लिंकिंग से लिमिट हो जाती है, क्योंकि अगर क्रॉस लिंकिंग बहुत कम होगी तो जेल का स्ट्रक्चर टूट जाएगा. ओके, इट विल डिसइंटीग्रेट, बट वी नीड अ सर्टेन porous structure. So what happens due to cross linking is the structure is maintained, right? So when you place this in water, it swells up and there's a vast sponge like structure with negative sulfonate ions. Why? Because we are talking about the cation exchange that has a sulfonate group, and there has to be a counter ion which may be a hydrogen ion or sodium ion depending on whatever we take. So when B plus ion is brought in contact with the resin or the exchanger, it is reversibly exchanged until equilibrium is reached, right? Equilibrium reach हो जाता है, तब तक वो उससे exchange होता रहता है. Now anion exchanger. What is an anion exchanger? It exchanges an anion, right? The counter ion will be negatively charged but the resin is positively charged. Now the only difference between this and the previously discussed one was the SO3H group. In this we have a quaternary ammonium salt which is positively charged. It can either be amine. When it is quaternary, it is considered highly positive, right? It is considered a strong anionic exchanger, right? So what is an anion exchanger? It is a high molecular weight cross-linked polymer containing an amine, right? For cation exchanger we can use the opposite definition. What are the requirements of a resin? Resin के requirements क्या होते हैं? सबसे पहला तो it should be sufficiently cross-linked, it should be insoluble, it should be hydrophobic for easy diffusion. आसानी से diffusion है, इसलिए उसका hydrophilic होना बहुत ज़रूरी है. मतलब okay. Now it should have sufficient number of ion exchange sites, right? And it should be chemically stable. Obviously it should not decompose नहीं होना चाहिए. It should be denser than water, and there are certain macro reticular resins that have a diameter up to maybe 130 nanometer. Certain molecules are very large, right? So they are not separated by the traditional resins. So we have these special type of resins known as macro reticular resins that can separate peptides, long chain of amino acids, right? Now what happens when an ion exchange takes place, right? We have a resin that has these are simply the equations. We have a B plus counter ion, and when C plus in the solution, what happens? On the right hand side, C plus gets exchanged with B plus and B plus goes into the solution. Similarly, if we take a journal example, we have Na plus, and on the right hand side we have Na plus in the solution, right? And in H plus and in an NaCl solution we have an exchange of Na plus and this formation of HCl. Now when a strong acid cation exchanger is present, it is independent of the pH, right? We do not require a control of pH, or it might not depend on the pH. But when we have a weak cation exchanger, when we have a SO3 minus group, sulfonic group, it is a strong acid cation exchanger. When we have a carboxylic group, it is a weak acid cation exchanger. So this works only when the pH is above 7. What happens when pH is above 7? There is a dissociation that takes place between the resin and the counter ion, and the ion is exchanged with the one present in the solution. Similarly, for this
anion exchanger, what we have is when we have a quaternary ammonium salt, it is a strong base, it does not depend on pH. But when we have an amine, okay, amine NMe2, it works as a weak base and the pH should be less than 7 for proper exchange of ion. Now ion exchange equilibria. What is ion exchange equilibria? Say ion A is in the resin and B is in solution. So towards the right hand side of the equilibrium, we have B in the resin and A in the solution. So the selectivity factor, okay, the selectivity K is defined as the concentration of products divided by the concentration of reactants. So as you can see, we have B in resin towards the right hand side as product, right, and A in solution. So what happens is when K is greater than 1, there is preference for B, obviously, because when K is greater than 1, there will be the concentration of B and A, right, in the resin and in the solution will be high. The concentration of B in this resin will be high and A in the solution will be high. So K will be greater than 1 and K will be less than 1. There will be a preference for A. Okay. So now different ions, अलग अलग ions होते हैं, उनकी अलग अलग selectivity होती है. जैसे लिथियम है, इसकी 1 है, H प्लस की 1.26 है, Na प्लस की 1.88 है, NH4 प्लस की 2.22 है. तो इस तरह से एनायंस और कैटायंस की इन सब की रिलेटिव सेलेक्टिविटी जो है वो अलग अलग है कोई भी एक कैटायन एक्सचेंजर के लिए. जो कि कैसे डिसाइड होता है वो हम अब देखेंगे. अब फैक्टर्स कैसे डिसाइड होता है, कैसे सेलेक्टिविटी डिसाइड होती है. सबसे पहले चार्ज बढ़ाओगे, व्हेन चार्ज इंक्रीजेस सेलेक्टिविटी इंक्रीजेस. थैलियम की सेलेक्टिविटी सबसे ज़्यादा, Na+ की सेलेक्टिविटी सबसे कम. ओके. और दूसरा नेक्स्ट फैक्टर, व्हाट इज द नेक्स्ट फैक्टर? नेक्स्ट फैक्टर इज साइज. ओके, व्हेन साइज इंक्रीजेस सेलेक्टिविटी इंक्रीजेस. फॉर एग्जांपल cesium+ is more selective. Okay, it has the selectivity factor is more for cesium and very less for lithium. Now when these ions are in +1 चार्ज, ये सब +1 चार्ज में, लेकिन ऐसे आयन्स है जो मल्टी चार्ज एटम्स भी होते हैं जिनका अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होता है. जैसे Cd+ है, ये इस सीरीज़ में सारे +2 में हैं. ओके ना, अगर +2 में इसमें साइज़ तो मैटर करता ही है, लेकिन इसमें एक और फैक्टर इम्पॉर्टेंट है, वो है इनकम्प्लीट डिसोसिएशन. तो पहला था चार्ज ज़्यादा होना चाहिए. व्हेन चार्ज इज़ मोर देयर इज़ मोर सेलेक्टिविटी, व्हेन साइज इज़ मोर देयर इज़ मोर सेलेक्टिविटी, व्हेन द चार्ज इज़ सेम, ओके, एंड विथ the charge is higher, then we consider a factor that is incomplete dissociation. Now in basic anionic exchanger, the size of hydrated ion follows the same pattern as the charge, right? So we consider the size of hydrated ion. Now when you want to exchange a higher ion, a highly charged ion, for example you want to exchange a +4 for +1, okay, this is the resin and it has a +1, say, okay, it has a hydrogen. So that needs to be concentrated. You need to pass a concentrated solution to exchange thallium with hydrogen, right? And when this pattern is shown as a means of depicting why, when there is we want a selectivity for a higher charge, or if you say we want the exchange of a higher charge, we need to concentrate the solution. And when we need to exchange a lower charge, for example maybe calcium is present in, let's say, resin, right? So when we want that exchange, thallium should be exchanged with calcium, so we need to concentrate the solution. And when we need to exchange calcium with thallium, we need to dilute the solution. Now this is about the nature of ions. The next one is about the nature of the resin. So functional group, okay, functional group, it depends on functional group which is present. For example carboxylic acid, sulfonic acid, whatever is present. Then there is degree of cross-linking. Then there is a preference for smaller hydrated ion, right? Now ion exchange capacity.
right? A particular ion exchanger has a number of active groups at which an ion can be exchanged, right? For example, it has 100 active ion groups, right? So the total number of active ion groups per weight of material, and total ion exchange, it is measured in millimole per gram. That means in 1 gram of ion exchanger, how many millimoles of ions can be exchanged. This depends on pH, and of course there's a regeneration that takes place. Okay, you can regenerate the ion exchanger by using certain solvents, or you can recharge it as well. So that is an important factor also. Now suppose we have a mixture of B and C, right? B and C. This slide is very similar to elution chromatography. So B and C, and these are present in a small quantity as compared to total IEC. So it is possible to separate B and C. How does that happen? Okay, we use different elution techniques. So what happens when we introduce a sample that contains B plus C, both of them? Okay, so B is held more firmly, B को ज़्यादा अच्छे से पकड़ा हुआ है, और C को उसकी इतनी अफिनिटी नहीं है, तो C क्या हो जाता है, फ्लो आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है, और B क्या होता है, वो बाद में आता है. ठीक है, इट टेक्स मोर टाइम टू कम आउट ऑफ द कॉलम. So at first we collect C and then we collect B, or first we detect C and then we detect B. What is the use of this? It is used to separate amino acids and lanthanoids. As you can see in this slide, there is a concentration versus volume graph, right? There is a concentration versus volume graph, and it is a Gaussian distribution. Okay, the pattern that is obtained is a type of Gaussian distribution in which most of the population shares a median, okay, median value. So this is the volume of B. This is the volume that contains all of B. मतलब क्या है, जब concentration जिस point पे सबसे ज़्यादा है, वहाँ पे जो वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम की रेंज है, उसमें ज़्यादातर बी के जो आयंस हैं वो प्रेजेंट है. ठीक है, तो हम ऐसे पता लगा सकते हैं कि किस वॉल्यूम में कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट या मोबाइल फेज पास हो जाएगा, और किस वॉल्यूम पे हमको सबसे ज़्यादा बी मिलेगा या फिर मिलता है. वैसे ही अगर दूसरा चार्ट हम देखें, तो अगर ये दोनों बी और सी की वैल्यूज़ अलग अलग है वॉल्यूम की, तो ये दोनों अलग अलग पॉइंट पे सेपरेट हो सकते हैं. इनका जो पीक है, इनकी पीक्स है, दैट इज़ ऑल्सो वेल सेपरेटेड. सो दिस इज़ अ गुड सेपरेशन. नाउ द रेट एट विच टू कंस्टिट्यूएंट्स separate in a column is determined by the ratio of distribution coefficients, where the distribution coefficient is given by, okay, amount of solute in resin, weight of resin in gram, divided by amount of solute in solution divided by volume of solution in ml. So this is known as the distribution coefficient, right? So this is the rate at which two constituents separate in a column. The second term that we are discussing here is alpha. It is known as a separation factor. Okay, it should be greater than 1. What is it? KD1 is actually the distribution coefficient for one of the component, and KD2 is for another. For a mixture we are discussing, so alpha should be greater than 1. This is the separation factor, how well the two mixtures are separated. And then we have a Vmax, right? The another equation. What is Vmax? It is the volume required to reach maximum concentration in effluent, right? So the graph that I was talking about, so it is the maximum volume, okay, that is required to reach the maximum concentration in the effluent. That means the ions in which we are interested in, जिस भी ion में interested है, वो ऐसी कौन सी वॉल्यूम होंगी जिसमें वो मैक्सिमम प्रेजेंट होगा. ठीक है, सबसे ज़्यादा आयन प्रेजेंट होगा किस वॉल्यूम पे. एंड वी नॉट क्या है, वॉल्यूम इन द इंट्राइसिस ऑफ द बीड्स. इंट्राइसिस क्या होता है, उसके जो गैप्स होते हैं, ठीक है, जो वॉइड होता है उसमें कितनी, उसकी कितनी वॉल्यूम है, तो वो क्या होता है, के डी वी नॉट प्लस वी नॉट, right? So this is the equation that relates the relation
between KD and Vmax. Now volume distribution coefficient, there is another term that is known as, एक और है जो बोलते हैं volume distribution coefficient. ये क्या है? Amount of ion in 1 ml of resin bed, right? The amount of ion in resin bed, resin में कितना है और उसके interstitial volume में कितना है, उसके बीच की volume में कितना है, ठीक है? 1 ml of interstitial void. So this is known as volume distribution coefficient. That means the distribution of an ion in the resin bed and in the interstitial volume. Okay. So dV can be related with KD. Okay, distribution coefficient से एक relation हो जाता है, ठीक है? dV is equal to KD into B. Okay, so what is B? It is a void fraction of settled column. Okay, it is a void fraction of, and what is Vmax has another relation with VB. Okay, the VB, what is VB? It is the volume bed. It has a relation with dV and beta. What is beta? Beta is void fraction. So all this will come into perspective when we discuss this numerical. ठीक है, ये सब कुछ इक्वेशंस है जो आपको ध्यान में रखनी है, जो कि यूज़ की जाती है. तो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. मिक्सचर ऑफ 0.05 मोल ईच ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन आयन इज टू बी सेपरेटेड फ्रॉम अ आयन एक्सचेंजर कॉलम ऑफ लेंथ 10 into 1 centimeter cross section using a 0.035 molar KNO3 as eluent. The distribution coefficient for the chloride and bromide is 29 and 65. तो हमने ये सब जो भी हमने इक्वेशंस डिस्कस की, इसमें से काफ़ी कुछ हम फाइंड कर सकते हैं. वो कैसे करेंगे? 0.05 मोल क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों को ऐड किया है एनायन एक्सचेंजर में, जिसकी लेंथ कुछ उसकी दी हुई है, और किससे किया है? एलुवेंट क्या यूज़ किया? 0.035 ml और KD दिया हुआ है. ठीक है, तो KD हमें फाइंड नहीं करना है, ठीक है, लेकिन हम फाइंड क्या कर सकते हैं? सेपरेशन फैक्टर. सबसे पहले अल्फ़ा सेपरेशन फैक्टर क्या था? KD1/KD2, 65/29. ओके, तो कैलकुलेट कर लो, 2 पॉइंट कुछ आएगा आंसर, 54 ऐसे, ठीक है. देन उसके बाद सेकेंड क्या हम फाइंड कर सकते हैं? VB क्या होता है? वॉल्यूम, बेड वॉल्यूम. ये कैसे कैलकुलेट होगी? जो बेड क्या होता है, जो कॉलम की जो वॉल्यूम होती है ना, वही बेड वॉल्यूम और कुछ नहीं. तो उसकी लेंथ क्या है कॉलम की? 10 सेंटीमीटर, और क्रॉस सेक्शन है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो क्या बन जाता है? 10 सेंटीमीटर क्यूब बन जाता है. 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है? 1 ml. तो 10 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा 10 ml. अब बीटा क्या मान इसमें दिया हुआ है कि 0.4 है, ठीक है. यहाँ पे अगर इक्वेशन में थोड़ा सा ऐड कर दे, 0.4 है बीटा, ठीक है. बीटा इज़ 0.4. तो उससे बीटा से हम क्या निकाल सकते हैं? V0 निकाल सकते हैं. इट इज़ इक्वल टू 0.4 into 10. ओके, तो क्या मिल जाता है? 4 ml. अब V0 क्या था? व्हाट वाज V0? वॉल्यूम इन द इंट्राइसिस ऑफ बीड्स. ओके, दैट वी नीड टू फाइंड. टोटल वॉल्यूम नहीं पता करनी है. टोटल वॉल्यूम तो वॉल्यूम बेड वो पता चल गई ना, 10 ml है. बट जो इंट्राइसिस में जो वॉल्यूम है वो कितनी है? 4 ml, राइट. सो उससे हम क्या निकाल सकते हैं? Vmax निकाल सकते हैं. मतलब कितनी वॉल्यूम में हमें मैक्सिमम कंसनट्रेशन मिल जाएगा, किसका? क्लोरीन का. तो Vmax की क्या इक्वेशन है? KD V0 प्लस V0, 29 into 4 प्लस 4, 120 ml आ जाता है. और ब्रोमीन का वैसे निकाल सकते हैं, उसका KD दिया हुआ है, ठीक है. हमने ये V0 अभी निकाला 4 ml, तो 65 into 4 प्लस 4, 264 ml. तो ये देखो कितनी सारी वॉल्यूम है. अब एक चीज़ हम नोटिस कर सकते हैं कि अगर ये कंसंट्रेशन बढ़ा दिया जाए, मान लो KNO3 जो हमने यूज़ किया उसका कंसंट्रेशन 10 टाइम्स कर दिया जाए, तो जो KD की वैल्यू होगी वो रिड्यूस होकर 6.5 हो जाएगी. जब ये वैल्यू 6.5 हो जाती है डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट, तो क्या होता है? तो Vmax की वैल्यू 30 ml हो जाती है. कहाँ से? 120 से रिड्यूस होकर सिर्फ 30 ml हो जाती है. तो ये मच स्मॉलर वॉल्यूम है एंड इट इज़ ईजियर टू सेपरेट. बहुत ज़्यादा हमें वॉल्यूम नहीं चाहिए, ठीक है. अब इसका लास्ट जो टॉपिक है
आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का वो डिटेक्टर है। ये दो तरह के हो सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल हो सकता है या ऑप्टिकल या ऑब्जॉर्प्शन एमिशन हो सकता है। दो टाइप में डिवाइड किया है प्रोसेस के बेस पे। पहला क्या है, द फर्स्ट वन इज कंडक्टोमेट्रिक, ठीक है। कंडक्टेंस अगर pH लेस देन 7 है, स्ट्रॉन्ग एनायंस है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एनायन है तो कंडक्टेंस हम मेजर कर सकते हैं कंडक्टोमेट्री से। और अगर pH अगर 7 नहीं है तो क्या होता है, जब वीक एनायन है तो हम एम्पेरोमेट्रिक डिटेक्टर यूज़ करते हैं जो कि वीक एनायंस को डिटेक्ट करते हैं। कैसे, यूजिंग सिल्वर एंड प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। दूसरा है द नेक्स्ट वन इज ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन, इसमें बियर लैम्बर्ट्स लॉ, यूवी विजिबल, तो उस तरह के फिनोमिनन यूज़ किए जाते हैं। और दूसरा है फ्लोरोसेंट, ठीक है, कुछ जो कंपाउंड्स होते हैं वो फ्लोरोसेंट शो करते हैं और उस प्रॉपर्टी को यूज़ करके उनको डिटेक्ट किया जा सकता है। तो ये सैम्पल स्पेसिफिक है। तो आई होप आपको ये आयन एक्सचेंज का जो लेक्चर है आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।